वेव की लंबाई, ठीक है। सो इसकी लंबाई कितनी है, ये है, ये लैम्डा हो गया, ये लैम्डा हो गया वेवलेंथ, ठीक है। ये तो नाम से ही हमें पता चल रहा है। कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं ना तो सारी चीज़ें उसके नाम में, उसकी डेफिनेशन में सारी छुपी होती हैं, सिर्फ हमें उसे रिलेट करके और समझने की ज़रूरत पड़ती है। किसी चीज़ को रटा मत करिए, उसके वो चीज़ें निकालिए जो उसे डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो कितना सिंपल है, वेव देन लेंथ, ठीक है ना, वेव लेंथ। अब पहले हमें पता होना चाहिए वेव कितनी है, ठीक है। इतनी नहीं है कि हम देखते जा रहे हैं, क्योंकि ये तो ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। ये कितना, सिर्फ इतना, जहां से ये, ठीक है, इतना, दिस इज द वेवलेंथ, ओके। एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जनरली हम फ्रीक्वेंसी वर्ड कहाँ यूज करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो या इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हम वर्ड यूज करते हैं ना, कॉमनली हम इस वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी काम, इस काम की फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है ना। हाँ हाँ, जल्दी हो रही है, हमने उसके लिए टाइम लिमिट दे दी है हमने, ठीक है ना। टाइम हमने उसके लिए डिसाइड कर दिया है, वॉट एवर द टाइम वी डिसाइड, ठीक है ना। हम 1 सेकंड ले लें, 2 सेकंड ले लें, 1 घंटा ले लें, ठीक है ना, 1 आवर ले लें, सेकंड ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी की बात करें, हम वेव की मत करो, ठीक है ना। हमने टाइम डिसाइड कर दिया कि इतने टाइम में, अब इतने ही टाइम में जो चीज़ बार बार हो, ठीक है ना, एक इतने 10 बार हो रही है, ठीक है ना, फिर उतने ही टाइम में वो चीज़ 20 बार होने लगी, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, ठीक है। तो ऐसे ही 1 सेकंड में निकलने वाली नंबर ऑफ वेव्स, वो क्या होगा, अब 1 सेकंड में ये इतना हो रहा था, ठीक है ना, अब क्या हो गया, और ज्यादा होने लगी, ठीक है ना, अब क्या हो गया, और ज्यादा होने लगी, ठीक है। तो ये क्या बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, नंबर ऑफ द वेव्स इन 1 सेकंड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब इसके बाद एनर्जी आपको पता ही है, ठीक है, रिन्यू इट नाउ, नहीं नहीं, वहाँ पे क्रॉस करिए, कहाँ है, कोने में साइड में, यस, ठीक है। तो जैसे जैसे हम रेडियो वेव्स की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है, तो लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है ना, लॉन्गर वेवलेंथ जो उसका स्ट्रक्चर है, अभी मैंने एक और नीचे एक और दिखाया है शायद, ये देखो सेम है, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर वेवलेंथ है, लेकिन वहां पर एनर्जी कैसी होगी, जब ज़्यादा है तो कम होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो रेडियो वेव हैज द लेसर एनर्जी, ठीक है ना, बट इफ इट हैज लेसर एनर्जी देन इट हैज लॉन्गर वेवलेंथ, okay. Now the gamma rays has shorter wavelength, shorter wavelength, it means high energy, okay, high frequency, because frequency is directly proportional to the energy, but wavelength is the inversely proportional to the एनर्जी, ठीक है। इसीलिए ये हमें स्पेक्ट्रा इसको लर्न करना पड़ता है, ठीक है ना, आपको ये याद होना चाहिए, ओके। जो कुछ चीज़ें हैं जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, आप एक आध चीज़ याद रखना हो तो जे थॉमसन के मॉडल में याद रखो, कुछ चीज़ें सिर्फ रदरफोर्ड के मॉडल में याद रखो कि थिकनेस कितनी थी, फ्लोरेसेंस मटेरियल क्या यूज़ किया गया है, एंगल कितना था, ये सारी चीज़ें कुछ कुछ एक दो याद रखो, लेकिन स्पेक्ट्रा को पूरा आपको याद रखना है, इससे बहुत सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लर्न करना आप लोगों का काम है। इट हैज सो मेनी रीजंस, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। रेडियो वेव्स कौन सी है, कहाँ यूज करते हैं मैम, जैसे इन्हीं में मोबाइल में यूज करते हैं रेडियो वेव्स, मोबाइल में यूज करते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं, और यहीं पे होता है अधिकतर इनका यूज, कम्युनिकेशन।
to show you one video about the electromagnetic radiation. ओके, इसको देखने से आपको जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो उसे थोड़ा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओगे आप। Something surrounds you, bombards you, some of which you can't see, touch, or even feel. Every day, everywhere you go, it is odorless and tasteless, yet you use it and depend on it every hour of every day. Without it, the world you know could not exist. What is it? Electromagnetic radiation. These waves spread across a spectrum from very short gamma rays to X-rays, ultraviolet rays, visible light waves, even longer infrared waves, microwaves, to radio waves, which can measure longer than a mountain range. This spectrum is the foundation of the information age and of our modern world. Your radio, remote control, text message, television, microwave oven, even a doctor's X-ray, all depend on waves within the electromagnetic spectrum. Electromagnetic waves, or EM waves, are similar to ocean waves in that both are energy waves. They transmit energy. EM waves are produced by the vibration of charged particles and have electrical and magnetic properties. But unlike ocean waves that require water, EM waves travel through the vacuum of space at the constant speed of light. EM waves have crests and troughs like ocean waves. The distance between crests is the wavelength. While some EM wavelengths are very long and are measured in meters, many are tiny and are measured in billions of a meter, nanometers. The number of these crests that pass a given point within 1 second is described as the frequency of the wave. One wave, or cycle, per second is called a hertz. Long EM waves, such as radio waves, have the lowest frequency and carry less energy. Adding energy increases the frequency of the wave and makes the wavelength shorter. Gamma rays are the shortest, highest energy waves in the spectrum. So, as you sit watching TV, not only are there visible light waves from the TV striking your eyes, but also radio waves transmitting from a nearby station, and microwaves carrying cell phone calls and text messages, and waves from your neighbor's Wi-Fi, and GPS units in the cars driving by. There is a chaos of waves from all across the spectrum passing through your room right now. With all these waves around you, how can you possibly watch your TV show? Similar to tuning a radio to a specific radio station, our eyes are tuned to a specific region of the EM spectrum and can detect energy with wavelengths from 400 to 700 nanometers, the visible light region of the spectrum. Objects appear to have color because EM waves interact with their molecules. Some wavelengths in the visible spectrum are reflected and other wavelengths are absorbed. This leaf looks green because EM waves interact with the chlorophyll molecule. Waves between 492 and 577 nanometers in length are reflected, and our eye interprets this as the leaf being green. Our eyes see the leaf as green, but cannot tell us anything about how the leaf reflects ultraviolet, microwave, or infrared waves. To learn more about the world around us, scientists and engineers have devised ways to enable us to see beyond that sliver of the EM spectrum called visible light. Data from multiple wavelengths help scientists study all kinds of amazing phenomena on Earth, from seasonal change to specific habitats. Everything around us emits, reflects, and absorbs EM radiation differently based on its composition. A graph showing these interactions across a region of the EM spectrum is called a spectral signature. Characteristic patterns, like fingerprints within the spectra, allow astronomers to identify an object's chemical composition and to determine such physical properties as temperature and density. NASA's Spitzer Space Telescope observed the presence of water and organic molecules in a galaxy 3.2 billion light-years away. Viewing our sun in multiple wavelengths with the SOHO satellite allows scientists to study and understand sunspots that are associated with solar flares and eruptions harmful to satellites, astronauts, and communications here on Earth.
We are constantly learning more about our world and universe by taking advantage of the unique information contained in the different waves across the EM spectrum. Okay, so you see we are surrounded with so many type of wave. ये सारी चीजें हम लोग बता चुके हैं, ठीक है, ये आप बुक में जाके पढ़ लें. So now end of this class, today's class. Okay, so now today's work is to study the electromagnetic radiation, which is the most important part of the this lecture. Okay, तो आप इसको पढ़ना, ठीक है.